Good afternoon, Hashita. Hello. Good afternoon. Good afternoon, all. Sir, welcome, sir. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure is mine. Can you hear me properly? Good afternoon, all. We're just waiting for students to join in, and very soon we'll start the session. Really honored to have all of you on this panel discussion. I think, 2-3 minutes wait, and we'll begin the discussion. Can you hear my voice properly? Yes, sir. Okay. Yeah, am I audible as well? I think everyone is audible. Oh, Hi, everyone. Hello, sir. Hello, sir. Hi, Hello hi. everyone. Hello, sir. A very good afternoon, sir and ma'am. This is to inform you that this panel discussion is also live streamed on YouTube. Many people have joined through the Google Meet as well, and we are streaming it live on YouTube.
So we just request you to wait 2 minutes more and then we'll start the floor. Thank you. Just close the door while coming away, okay? Yep. Youth of today are the leaders of tomorrow. Today, I, Ananya Yadav, and I, Harshita Lalwani, welcome you all in 2022 panel discussion named Yuva Talks, organized by Department of Economics, the Bhopal School of Social Sciences. Because you're young, you're thrown between the world of hate and the world of peace. So much to lose, so much to gain, so much to fight for, and so much to change. It's a society current narrative. And fourth, we are here for a panel discussion. It's by the creative and how we cannot do the youth for a Ananya? Your voice is cracking. Yes, it is. Must be some network issue over there. Anji. Okay, if ma'am, sir, we are audible. Your voice is still cracking and your picture is also hazy. Not very clear. It's slightly better now. They're getting scared. Nanna, can you please take another phone or mic?
Youth of today are the leaders of tomorrow. Today, I, Ananya Yadav, and I, Harshita Lalwani, welcome you all in 2022 panel discussion named Yuva Talks, organized by Department of Economics, the Bhopal School of Social Sciences. Because you're young, you're thrown between the world of hate and the world of deeds. So much to lose, so much to gain. So much to fight for, so much to change. Is prima facie in current scenario. Henceforth, we are here for a panel discussion emphasizing on the challenges faced by the today's youth and how these challenges get resolved. As it's rightly said, we cannot build the future of our youth, but we can build our youth for the future. And now I would like to introduce our esteemed panelists from diverse fields of politics, social sector, media, and mental health. Our first panelist, Mr. Gaurav Jain, is a national spokesperson for Indian Youth Congress and a lawyer by profession, practicing in Supreme Court. We have an expert psychologist with extensive experience in dealing with mental health issues of the youth. Mrs. Shikha Handa, she is a founder at Professor V.K. Memorial Trust for Counseling and Mental Rehabilitation and Psychology Counselor and Teacher at Christchurch Girls School, Jabalpur. Mr. Gaurav Jain and Shikha ma'am, I would like you all to wave at our audience, please. Hi everyone, Gaurav here. Thank you. And now, our next panelist is a representative from social sector, Mr. Sanjeev Joshi, who is the head of NGO named Archer Branch of Sanjeevani Jeevan Society. And also, we all are aware the impact of actors in our lives. So we have Mr. Karan Kapoor, and who is a well-established actor, to share with his experiences and perspectives. I would like Mr. Karan Kapoor and Mr. Sanjeev Joshi to wave at our audience, please. Sure. Hello, everyone. Okay. And now I would request our moderator, Ms. Divyanga Vaishya, to take forward the panel. Wait. A very good afternoon, sir and ma'am. It's an honor for us to have you here with us to share your immense knowledge and experience with us. My first question is with Ashish sir. Sir, since you are a politician, you are a national spokesperson for Indian National Youth Congress. So the term itself suggests that it is Youth Congress. Youth means युवा. And sir, it is a known thing that एक जिंदगी बहुत कम है सारी चीजें करने के लिए. It is always good to learn from experience. And since you have worked with so much, so much great leaders around the world or around India, you must know that what are the characteristics which describe them. Being a part of the Youth Congress, what do you feel the world, let alone India, would look like अगर युवा अपना पूरा potential realize कर ले? If we use all the skills we have, what would happen to India or the world? Before I start, let me give you a very interesting statistic. Okay, so average age in India is around 29. Okay, around 65% of the Indian population is below the age of 34. But at the same time, the average age of a parliamentarian is 54 or 55 or 58. It keeps on differing. So what we see whatever the lawmakers are making, they should reflect the society in the contemporary sense. Whatever is happening right now, it's happening because there's a gap between the lawmakers and the general masses. Okay, so a lot of times we see issues regarding which the lawmakers have no information. So there are so many complex topics right now which the lawmakers, I think the majority of the lawmakers have no idea about. Say if you go for cryptocurrency, if you go for say anything, say live-in relationships, or there's so many different issues. So even the cannabis legalization issue. So the difference between the lawmakers and the general masses, it's a huge. And
why I'm in politics is because I believe like if youth participate more into politics, it'll be much better for the country and for the society as a whole. And we've seen like all around the world, whether you take example of Chile or whether you take example of New Zealand, where Jacinda Ardern has just been sworn as the prime minister. So we see wherever youth comes into politics, there's a progressive growth for the society, and that's where youth has always been anti-status quo. जो youth होता है वो हमेशा society को कुछ नया करने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे आप ऐसे बूढ़े होते जाते हैं then you become more orthodox. तो अभी क्या होता है कि जो हमारा youth है, it is more, it is challenging the laws. See, right now we are seeing a huge uproar regarding the recent government policies regarding Akhil. So what is happening? There's a breakdown of dialogue between the lawmakers and the people for whom the laws are being made. तो अगर वहाँ पर यूथ ज्यादा होता, अगर वो 35-40 साल के लोग पार्लियामेंटेरियन ज्यादा होते, then they would have raised their issues कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और उस तरीके से एज अ सोसाइटी ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसको बना सकते हैं, क्योंकि जो लॉज होने चाहिए वो कंटेम्प्रेरी होने चाहिए, ऐसे नहीं क्योंकि और अगर लॉज कंटेम्प्रेरी नहीं होते then what happens, see whatever the issues are, say example of 377, so वो भी जो लॉ था सेम सेक्स मैरिज का, वो भी जुडिशियल इंटरवेंशन के बाद हुआ, पार्लियामेंट्री उसके अंदर कोई भी वो नहीं बना, लॉ नहीं बना. तो इसीलिए अगर पार्लियामेंट में ज्यादा यूथ होगा या पॉलिटिक्स में ज्यादा यूथ होगा तो हमारे जो कंटेम्प्रेरी वैल्यूज हैं वो उस चीज को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे. दैट इज व्हाई आई आस्क पीपल टू पार्टिसिपेट मोर इनटू पॉलिटिक्स, बिकॉज़ इट्स वेरी इजी to criticize from afar, but once you get into it and then you actually start working for it, then you realize how difficult can things be. So right, so actually that's a very pressing issue with India. While we have a very young population, at the same time we have relatively older people in the politics. There are relatively older politicians in the Lok Sabha and Rajya Sabha. So, not switching from the topic, but taking a similar view, I would like to ask Karan sir here that, we talked about youth entering into politics, but zyadatar we have seen that the youth of today is also interested in the fame lifestyle, acting and stuff. They want to feel what fame and respect feels like. So, sir, what are your take on the point that whether youth should enter into acting, or should it be considered as an insider world? There's a debate about insider and outsider. We have very pressing mental health issues for outsider. So what is your take on the issue? See, just because we are in limelight and stardom field, it's like a cakewalk, right? So industry is the same, like if you become CA, chartered accountant, or airline industry, hotel industry, any industry. So what you need is for you पढ़ लिख के, then you will get the certificates, then you will enter everywhere. See, in my case, when I joined industry, that time I didn't know anything. I just went to Mumbai to pursue my MBA. I joined in Sydenham College. I didn't know anything, but I was giving auditions, and it was like earning hefty amount on the spot. So अच्छा चलो very good यार. So I used to save money, then portfolio करवाना. See, when you want to become actor, so actor is not like कि मतलब if you have good looks or you have good body. Actor is totally package. You should know what is camera angle, what is lighting, what is action sequence, what is dances, everything you need. So any field, it's not acting field only. Any field, if you want to join it, if you want to go any field, so you need fully package, total package. I agree, sir. The grass is always greener on the other side, and from the outside we see all the limelight and fame that the people get, but it is of course a package deal, as you said. Struggle is there in every cases. Yep. Yes, sir, I agree. So my next question is with Shikha ma'am. Ma'am, as we talked with Karan sir about the fame lifestyle, not to sound too philosophical, but the materialistic culture now taught us to, accept the filter lifestyle, to hide our true self. Like we are afraid to express ourselves in front of others. Even data said that 20% of youth are afraid to express themselves in front of others because of the risk of being bullied. So, ma'am, आपकी views क्या है इस बारे में कि should we hide our true self,
or should we be candid with others? Like अगर हम खुद अपनी तरह रहेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं? क्वेश्चन ये है कि आप क्या चाहते हैं. क्वेश्चन ये नहीं कि लोग हमें पसंद करेंगे कि नहीं. The question is, what is it that an individual wants? Whether they want to be liked by others. Of course, all of us want to be liked by others. But again, at what cost? Is it taking away our identity? And if it is taking away our true self, are we okay with it? Yeah. What we project on the social media, what we project to the world as to who we are, it's a different thing. It's not. It is based on what is it which is going to be accepted. But more than accepted by the other person, I feel what needs to be understood is it okay for me? Am I okay the way I am, or am I okay in certain other ways? So what is it for me? What is my priority? That is the most important thing which we need to consider. Exactly, ma'am. I think you have revolved the question completely. It is not whether people will accept us or not. It is more about whether we accept us, the way we are presenting our interesting day. Ma'am, thanks a lot. So my next question is with Sandeep sir. Sandeep sir, yeah. Hello sir. So my question is, talk about philanthropy or altruism or paropkarita, as we said. कि जब हमें कोई देख रहा है तब हम अच्छा बिहेव करें लोगों के सामने. Like people involved into foundations and charities just to evade taxes, ताकि उन्हें टैक्स कम पे करना पड़े. But sir, when it comes to real philanthropy, real foundation which you are operating like an NGO, सर क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए जिससे हम लोगों के हित के लिए ज़्यादा काम करें और खुद के लिए काम करें? देखिए, सोशल सेक्टर में सबसे जरूरी जो होता है वो जरूरी होती है. मैं हालांकि आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो जो सोशल सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर जो है अपने स्वार्थ के लिए लोग ज्यादा लोग जुड़े होते हैं. लेकिन मेरा जो सोचना है और मेरा जो समझ है वो ये है कि अगर आपको सोशल सेक्टर में अच्छे से काम करना है, लोगों के लिए अच्छे से वर्क करना है, तो सबसे पहले खुद के अंदर वो भावना हमें पैदा करनी होगी कि जो हम काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ है. हमारे लिए उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए. हम जो करने जा रहे हैं वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हम काम कर रहे हैं. और उसके लिए जरूरी ये होता है कि अगर हमें इस फीलिंग को, इस भावना को अगर हमको पैदा करना है तो पहले हमें उस सोसाइटी में या उस कम्युनिटी में जाना जरूरी है जहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग रहते हैं, या हम बच्चों की बात करें या जो लोग हैं जो जिस कंडीशन में रह रहे हैं, उस कंडीशन को प्रैक्टिकल जाके हमको ये पहले करना होगा और करके दिखाना होगा कि नहीं, ये वाकई में एक बहुत जरूरतमंद है और इनको मदद करने की जरूरत है. आपने देखा होगा कि आजकल जो हर कोर्स में सोशल सेक्टर में एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है. उसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि लोग ये जो युवा हैं या जो स्टूडेंट हैं वो कम्युनिटी से उनका एक जुड़ाव हो, और वो हमारी सोसाइटी में किस तरीके के चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं या जो बच्चे जो फेस कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी सुविधाओं को नहीं पा रहे हैं, उनकी कितना सुविधाओं का अभाव है, उस चीज को समझना और उसके साथ उनको साथ लेते हुए उनको हेल्प करना, एक प्रैक्टिकल तरीके से ये करना बहुत जरूरी होता है. तभी जाके हम उस चीज को समझ पाएंगे और उनको हम निस्वार्थ भाव से उनके साथ हम काम कर पाएंगे. That's a very interesting take on the subject, sir. Thanks a lot. आपने जैसे कि कहा कि it's more important to work for others than for ourselves in the first step. So my next question is with Karan sir. Sir, there are lakhs and crores of people that move to Mumbai every year in the hope of becoming an actor someday or performing. I can't hear you. You're on mute. Thanks a lot, sir. That's an interesting take. Sandeep sir, thanks a lot. So my next question is with Karan sir. Sir, lakhs and crores of people move to Mumbai every year in
the hope of becoming an actor or working in the big screen. So sir, actor is basically an artist, and artistic work is all about observation. So sir, have you observed the people who have failed, or may I say not failed, who have not performed on the big screen yet? So what is your take on the on the people, on the life of the people? How can they manage their mental health or their career after after it doesn't work out in acting? Good question. Actually, what happened that when I joined this industry, I didn't know anything. मुझे सी भी नहीं पता था, मुझे ए से जेड तक कुछ नहीं पता था. But can you see? Frozen. Hello, can you see me? Yes sir. जी अभी बीच में फ्रीज हो गए हैं. अभी ठीक है? Yes sir, now you're audible and visible. Okay. Okay. So then क्या होता है कि कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ता है, पर जब एक चीज मिलती है तो यू अंडरस्टैंड योर ओन कि कैसे क्या करना है. सो अर्लियर व्हेन आई जॉइन दिस इंडस्ट्री, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं सीरियल्स करने वाला हूँ, मूवीज करने वाला हूँ, या मॉडलिंग करने वाला हूँ, या कमर्शियल्स करने वाला हूँ. पर जब मैं कमर्शियल एड्स करने लगा, तो मुझे धीरे धीरे पता चलता गया कि मुझे इस इंसान से मिलना है. ओके, आफ्टर दिस आई हैव टू मीट दिस पर्सन, from this person he is going to introduce me to this person. So धीरे धीरे वे मिलता गया. कुछ 50-55 कमर्शियल्स करने के बाद में फिर मेरे को पता चला कि इंडस्ट्री इज नॉट स्मॉल, इट्स वेरी बिग. इट्स लाइक अ समुंदर, यू कैन से दैट. व्हेन आई बिकम ब्रांड एम्बेसडर फॉर रिलायंस, तो मुझे समझ में आया कि ओके, नाउ दिस इज व्हाट यू हैव गेन आफ्टर 50 कमर्शियल्स. नहीं तो बिकॉज ऑफ 50 कमर्शियल मुझे कुछ पता ही नहीं चलता. 10 मिनट का ऐड है और 10 सेकंड का ऐड है, 60 सेकंड्स का ऐड है, बस चले गए वो उसमें. बट व्हेन आई then I did रोक सको तो रोक लो मूवी, then I did 13 सीरियल्स, then I was going into सरकार मूवी. मतलब कारवां मिलता गया. पर जब मैं देखता था मेरे साथ में जो एक्सरसाइज करते थे वो कुछ नहीं बन पाए. मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ. एक फिल्म आई थी धूम, स्टार्टिंग वाली, जॉन अब्राहम की. सो उसमें जॉन अब्राहम के साथ में 4 लड़के थे. उसमें एक मोहित करके लड़का था. सो वो हम लोग के जिम में एक्सरसाइज करता था. कब 2001 की बात बता रहा हूँ मैं. और धूम कब आई थी? आई थिंक 2010 या 2008-9 में आई थी. तो उसके 10 साल के बाद उसको काम मिला. एंड मुझे मेरा काम पहले मिलना स्टार्ट हो गया था. तो मैं देखता हूँ कि वो क्यों नहीं मिल रहा है. I asked him one day कि तेरे को काम क्यों नहीं मिल रहा है, why not getting work? So his problem was कि मुझे किसी से बात करना नहीं आता और मुझे किसी से मिलना नहीं आता. So if you want to get work, you have to meet people, and when you will meet people, then person will recognize you. So वो बोलते ना कि जो दिखता है वही बिकता है. Our industry is like that. तो इसमें कोई फेल्योर नहीं होता है. फेल्योर आप खुद हो जाते हो अपने माइंड से, डिप्रेशन में आके या कुछ करके. यू हैव टू, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आफ्टर 30 years ही इज गेटिंग वर्क नाउ. सो आपको दिखना पड़ता है इंडस्ट्री में. Exactly sir. Sir, a very interesting line you said. लोग मिलते गए, कारवां बनता गया. But sir, जुड़ने के लिए भी we know how to step in the world. The first step is very important. So my next question is with Gaurav sir. Sir, politics as we know it now is not far away from the film industry in the take of nepotism. There's a lot of talk about nepotism. That a politician leader is a politician. We need a godfather to enter into politics, and we need someone. We need a helping hand, a guardian angel to enter into politics. So, what is your take on this issue, sir? How can the youth of today, a normal person, a regular Joe, could enter the politics, or succeed in the politics? Entering and succeeding is different. See, first I would like to answer that question on nepotism. What I found out कि मतलब जैसे इंडिया में it's not just with the politics, it's with every industry. Even if you go to the medical industry or you go to say any industry, यहाँ पर एक अगर बिजनेसमैन है तो उसका बेटा भी बिजनेसमैन बनता है. एक अगर डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर बनता है. क्रिकेटर चाहेगा कि उसका बेटा भी क्रिकेटर बने. एंड इट इज सो मच लाइक व्हाट डू यू से, मतलब सोसाइटी में ये चीज इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है. एंड सम वे समहाउ आई वाज रीडिंग दिस पेपर जिसमें था कि इस सारी चीज का जो रूट है ये बेसिकली कास्ट सिस्टम से इवॉल्व होता है. क्योंकि वहां से आप शुरुआत से जैसे आप देखते हैं कि
एक आप बनाना स्टार्ट कर देते कि एक आप अपनी क्लैन बना रहे हो, एक क्लैन का जो आदमी है वो वही काम करता जाएगा, एंड पीपल जनरली आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि ठीक है, अगर आप ये काम कर रहे हैं, अगर आपके घर में 2 वकील हो गए तो तीसरा आदमी को भी वकील बना दो, आपका काम अच्छा कर लोगे। अगर आपके घर में 2 एक्टर हो गए, तीसरे आदमी को भी कर लोगे, क्योंकि होता क्या है कि जो ग्लास सीलिंग होती है उसको तोड़ने में इतना टाइम लग जाता है कि जो आदमी अगर एक बार उस सीलिंग को तोड़ ले तो वो चाहेगा कि अपने साथ के जो दूसरे लोग उसको भी उसमें पुल कर पाए, ऊपर पुल कर पाए। तो इसी वजह से ऑफ कोर्स दिस नेपोटिज्म, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, जैसे मतलब उसमें फेवर होता है, बट ये मतलब पहले ऐसा होता था कि आप अगर चाहें तो अपने फादर के नाम से जीत जाएं, आप किसी उसके नाम से जीत जाएं, बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इतना ज्यादा इंटरेक्शन होता है लोगों का एक दूसरे से, पॉलिटिशियंस यू सी देम एवरी डे, उनका सोशल मीडिया होता है, अगर वो एक बार भी गलती करते हैं, मतलब अगर कोई ऐसे डम है पॉलिटिशियन, ठीक है, नॉट डम इज नॉट राइट वर्ड, बट अगर कोई उतना एक्टिव नहीं है तो आपको पता चल जाएगा, और वो बेबी एक बार चुनाव जीत जाए, लेकिन दूसरी बार जब वो लोगों के सामने जाएगा, डिबेट करेगा, कुछ भी करेगा, तो चीजें पता चल जाती हैं। रिगार्डिंग नेपोटिज्म ऑफ कोर्स इट हेल्प्स, बट इट आल्सो यू नो प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों चीजों के, क्योंकि एक तरीके से आपको कनेक्शन बनाना आसान होता है, जब आपके कोई फैमिली में ऑलरेडी पॉलिटिक्स में होता है तो आप आसानी से कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन उसी के साथ में जब अब आजकल चूंकि इतना हो गया कि आप कुछ भी काम कर लो आपको दुगना काम करता है, अगर दुगना काम करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप सिर्फ अपने फादर की वजह से या आप सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से पॉलिटिक्स में नहीं हो। तो वो दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, और नए लोगों को पॉलिटिक्स में आना सी, आई जस्ट टेल यू द स्टोरी ऑफ माय फादर, क्योंकि he comes from a very humble background. My grandfather was a train driver. No one in our family was into politics. In UP, there's a huge amount of caste politics. My caste had around 2,000 votes in the entire constituency. But because my father was, you know, he fought student elections in the universities and all, he had a connect with people. We had no resources, and he was contesting against several industrialists. But then again, he won because he had connect with people. सो वही है कि आप एक बार कनेक्ट आप खुद करते रहो, आपके इंटेंशन अच्छे हो, आप प्रो बोनो काम करते रहिए, इट वुड बी मच बेटर, मतलब काफी आसान हो जाएगा, और उस तरीके से मतलब कर सकते हैं। तो यूथ को ऐसे डरना नहीं चाहिए कि पॉलिटिक्स में आना है तो हमें सिर्फ मतलब किसी का नाम होना चाहिए, गॉडफादर होना चाहिए, तभी कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जो ऑर्गेनिकली चलते हैं, और अगर आप उसको पकड़ लो उसको और आप उसमें काम करते रहो, ऑफ कोर्स यू विल, मतलब हु न्यू के इतने सारे लोग आके कहीं से भी दिल्ली में गवर्नमेंट बना लेंगे, या फिर इतने सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। तो उस चीज को अपन लेके मतलब चलेंगे तो मतलब आई थिंक यूथ पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा, वो वही है कि आपको जर्नी स्टार्ट करनी तो एक बार घर से निकलना ही पड़ेगा, अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो जर्नी स्टार्ट होगी ही नहीं। Right, sir, absolutely right. And I think the key takeaway from this is luck favors the brave. Once we'll take the first step, and then everything will follow. Thanks a lot, sir. Hats off to you on how far you have come. We are definitely inspired by your journey itself. So my next question is with Shika, ma'am. Ma'am, our generation, that is the Gen Z as we call it, is considered a burnout generation. You know, we are always on the brink of burning out. Like we are overwhelmed with everything. And in such a phase, in such a generation, not being there for ourselves, we compromise our basic needs to be there for someone else. So the thing happens is if we take care of ourselves, then we are categorized as someone else selfish. People call us selfish, that you always think about yourself and stuff. So what do you think, you know, how to get away from this insecurity of being labeled as selfish? And you know, it's always good to be there for someone, but it is equally important to be there for ourselves. So ma'am, what is your take? Yeah, like you very rightly said, it's very important to be there for yourself. Yeah, unless we are there for ourselves, it's difficult for us to be there for somebody else. You need to be first aware about what is it that you need, what is it that your system demands from you, and if you are not able to figure that out, अगर आप उस चीज को, अपनी needs को नहीं आप meet कर पाएंगे, तो you cannot actually help anybody else. It's practically impossible, right? So irrespective of what anybody may say, it is very important to take care of yourself. You used the word youngsters are being overwhelmed all the time, right? So yes, overwhelming is very important,
It's a beautiful thing to be aware that you are overwhelmed, to be aware of what your real feelings are. मतलब जब हमको पता चलता है कि हम ये महसूस कर रहे हैं और हम उसको इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, तभी हम अपने इमोशनल स्टेट को इजीली हैंडल कर पाएंगे. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग ओवरवेल्म होते हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं. एंड बिकॉज हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो फीलिंग हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली रहती है और वो फीलिंग, वो इमोशन हमको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर ओवरवेल्म हो रहे हो, आप उस फीलिंग को, उस इमोशन को एक्सप्रेस करो, उसको वैलिडेट करो. क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को वैलिडेट नहीं करेंगे तो वो इमोशन बार बार होता रहेगा और तभी हम कभी कभी अटक जाते हैं. वी आर लाइक स्टक. They're like, okay, what do I do now? And you wonder, okay, in this situation, yeah. So it's very important to feel that emotion, to express it, to validate it, to accept it. And once you are able to accept your emotion, आप लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हो. और जब आप अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लोगे तो ऑब्वियसली वो जो सेल्फिशनेस जिसके बारे में आप बात कर रहे हो कि लोग हमें कहते हैं हम सेल्फिश हैं, वो अपने आप चला जाएगा. So it's very important to be emotionally sensitive. It's very important to be emotionally aware, to be sensitive to what's happening to you, to be sensitive to what are the emotions that you're experiencing, where are you experiencing, what are the changes that emotion is bringing to you, and with that awareness, it will settle down. And with that awareness, you can take care of yourself, and once you are taking care of yourself, you can take care of the other people as the situation is demanding from you. Yeah, ma'am, I totally understand, and I feel it is totally okay not to be okay sometimes. Yeah. And what I believe, what I have felt in my experience is that the more we suppress our emotions, the more exaggerated will be the outburst when when everything comes out. So yes, ma'am, thanks a lot for that. तो फीलिंग्स के बारे में एक बात, मतलब विच इज माय वेरी फेवरेट थिंग इज दैट कि फीलिंग्स जो होती है ना, बिल्कुल मेहमान की तरह होती है. जब मेहमान आता है आपके घर में, आप दरवाजा खोलते हो, उसको बिठाते हो, चाय पानी पिलाते हो और वो थोड़ी देर में चला जाता है. उससे गपशप करते हो, उससे पूछते हो आप क्यों आए हो और वो चला जाता है. उसी तरीके से फीलिंग्स भी होती हैं. अगर वो आती हैं, हम उसको वैलिडेट करें, गपशप करें, तो वो चले जाएंगे. लेकिन अगर हम उसको डिनाई करते रहेंगे, सप्रेस करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में स्टोर होंगी और एकदम से आउटबर्स्ट हो जाएगा. एंड देन इट्स मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल. Yeah, ma'am, I totally agree. And I can't even tell you how much I relate to what you are saying. But in the light of keep conversation light, so my next question is with Sandeep sir. Sir, हम जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाते हैं, इट्स इन एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एक फैक्ट्री जब तक सक्सेसफुल होती है तो वो उसके आसपास पोल्यूशन बढ़ जाता है. जब पुलिस पे केसेस ज़्यादा होते हैं तो वो छोटे मोटे केसेस पे ध्यान नहीं देते. जैसे कि सर आप रिसेंटली हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी बच्चों की मदद की. तो सर ऐसा क्या समाज में बदलाव ला सकते हैं हम, जिससे छोटे से छोटा इशू और बड़े से बड़ा इशू को उतना ही हम लोग ध्यान से करें, और जिस हिसाब से आप करते हैं सर, आप अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, बदलाव तो सोसाइटी में लाने की जरूरत हमेशा बनी रहती है, लेकिन अगर हमें सोसाइटी में बदलाव लाना है तो सबसे पहले तो हमें खुद में बदलाव लाने की जरूरत है. शुरुआत में अगर मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो जब मैं इस फील्ड में आया, जब मेरी उम्र लगभग 19 ईयर होगी, और तब से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूं. और मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहा हूं. तो शुरुआत में जब मैं लोगों के बीच में जाता था, और या हम डिपार्टमेंट की बात कर लें या सोसाइटी की बात कर लें, जब मैं लोगों के बीच में जाता था और उनसे मैं कहता था कि ये जो बच्चों का अब्यूज का जो इशू है, या उन्हें फैमिली में दोबारा से रिहैब करने का जो इशू है, तो उनका जो थिंकिंग होता था, वो जो सोच होती थी, वो एकदम मतलब ऐसी होती थी कि कोई मतलब नहीं है इन इशू को लेके, सोसाइटी में ये तो पहले से चला आ रहा है, ऐसा ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ये चलता रहेगा.
तो कई बार इन चीजों को सुन के जो हमें नेगेटिव थॉट्स मिलते हैं, नेगेटिव जो चीजें हमें हमारे सामने आती, तो कभी कभी हम भी नर्वस हो जाते हैं, या मैं भी नर्वस उस समय होता था कि अभी हम किस तरीके से इनको हम समझाएं, किस तरीके से इनको हम मोटिवेट करें कि ये जो वास्तविकता है या जो सोसाइटी में जो इशू है बच्चों के लिए या लोगों के लिए, इसको हम कैसे समाज तक पहुंचाएं और वो समाज कैसे एग्री हो इस चीज को करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है शुरुआत में, लेकिन कुछ हद तक मैं ये कहूँ कि कुछ चीजों में हम लोगों ने काम किया है और बेहतर काम किया है। तो उसका ये परिणाम भी है, ये अनुभव भी है कि हमें जब हम फील्ड में काम करने जाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे तो हमें दोनों लोग मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे। तो हमें वो जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको हमको साइड में रखते हुए जो पॉजिटिव चीजें हमें मिल रही हैं उनको साथ में लेते हुए, उन लोगों को साथ में लेते हुए उनको आगे हमें बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो लोग हमारे साथ बने रहते हैं और अभी भी बने हुए हैं और हमेशा हमें भी अप्रिशिएट करते हैं, हमें हमारे कामों में मदद करते हैं और हमें भी एनकरेज करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप करते रहिए और हम आपके साथ में हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब फील्ड में काम करने जाएंगे तो हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन जो आपका जो उद्देश्य है, आप उद्देश्य पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम सोसाइटी में जो चेंजेस लाने की हम जो बात कर रहे हैं वो हम उस तरीके से चेंजेस हम ला सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात कही है आपने कि सबको साथ लेके चलेंगे तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा खुशी से हमें अपना मुकाम मिलेगा। लोगों को हरा के तो कोई भी जीत सकता है। तो सर, it has been very nice, a very lively discussion. We would now like to open the panel for questions. There are a bunch of questions in the chat box. So our team will ask you the questions one by one. Okay, so who would like to ask first? You are requested to unmute one at a time. So I would like to ask the question. So I would like to ask the question from Gaurav sir. There are many issues which needs more attention, like unemployment, but all the attention is given to religious disputes. So what's your take on this? I mean, giving attention to religious disputes is just one way to divert attention from the main issues. Okay, religious disputes, it's an artificially created issue right now. Because the main contending topics right now are the unemployment, the economy, other issues such as data surveillance or cryptocurrency. There are so many different issues which concerns particularly this generation. But now what is happening, because there's a syndicate between several media houses and because everything is so monopolized. I mean, the media is captured by a few entities. Okay, the entire 27 news channels are run by single entities. So what happens is that they control the information, and not just the media. Now the social media is also controlled. So there's a new age of capitalist surveillance by social media, by media, and by which कि आप कुछ भी करें, आप कुछ भी देखें, मतलब आपके फोन में जो मेन इंटरेक्शन होता है, आप अपना फोन उठा के देखिए। लेकिन हर आदमी का जो रियलिटी है वो अलग अलग है। आप एक बार फोन उठा के देखेंगे, आपको वही खबरें दिखेंगी जो आप देखना चाहते हैं। And because of this, the society is becoming more and more polarized. और जैसे जितना ज़्यादा polarization होगा, जो main issues हैं, they will be, दोस्तों के बीच में दरारें पड़ जाएंगी और society के बीच में पड़ जाएंगी, और उससे होगा क्या, जो मेन इश्यूज है आप उस पर बात करेंगे नहीं और जो दूसरे इश्यूज हैं आप उस पर करते रहेंगे। और इससे आप समझिए व्हाट इज हैपनिंग, जो पुअर रिच डिस्पैरिटी है देश में, इट इज इंक्रीजिंग। वी आर नाउ फार बिहाइंड बांग्लादेश एंड नाइजीरिया इन दिस पर कैपिटा इनकम। सो और दूसरे टाइम पे इंडिया इज क्रिएटिंग बिलियनियर्स एवरी वीक। सो वन हैज टू सी हु इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम ऑल दीज डिस्कशंस एंड वेयर इज द country resources are going. So once the youth take up this, and what is also happening, we have seen there's a tendency to crack down the liberal space in the universities in past 5, 7, 8 years. आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी होती थी वो काफी ज्यादा ऑटोनोमस होती थी। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप कोई भी डिस्कशन करें, अभी वो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थी, शी मस्ट बी ऑफ योर एज ओनली, वो उसने कुछ करा और उसके लिए आपने पूरा क्या बोलते हैं उसके ऊपर UAPA लगा दिया, दिशा रवि, ओके, UAPA लगा दिया, जो आप डिस्कशन से ही बच रहे हो, डिबेट से बच रहे हो। और जो मेन काम होता है यूथ का वो यही होता है, क्योंकि जितने भी आइडियाज आते हैं
वो डिस्कशन के थ्रू आते हैं, डिबेट के थ्रू आते हैं. जब आप डिस्कशन और डिबेट को बंद कर दोगे, then there will be a dearth of new ideas, and once there's a dearth of new ideas, जो सोसाइटी होता है वो ऐसे रॉट होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसीलिए one has to fight for the freedom, especially this generation, क्योंकि if you don't fight for your freedom, क्या आपको लगता है कि ठीक है अभी हम इस टॉपिक से बात नहीं करते, we are happy in our own little space, तो फिर आगे जाके आप किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर पाओगे. इसीलिए जो मेन है कि जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स का जो स्पेस है, डू डिबेट व्हाटएवर आइडिया इज. डिबेट से कभी नहीं बचे आदमी, और जब तक जितना हो सके एक्टिवली पार्टिसिपेट करे पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिटिक्स में, किसी भी चीज में. दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड टू सेव दिस कंट्री एंड टू सेव अवर सोसाइटी. Rightly said, sir. This may be called as the law of attraction. You know, the way we think, we attract the same thing to us. So now I would like to request the next question. I would like to ask Karan sir a question. That nowadays we see that there are so many suicides in Bollywood industry. Recently, during this COVID pandemic, we have seen a big controversy on this suicide matters. So, sir, why? I mean, the question is why all these suicides happen, and what is the stress level of actors? I would like to know your opinion on this. Thank you. I don't think so. There is some stress or something. I can say only one word is called depression. And on this period of time, 2020 and 2021, 1-1.5 साल तक किसी ने काम नहीं किया. So जिसके पास those people have lots of money, they were surviving. Those were struggling, so they were having some problem. Or most over that, it depend on your mind. It's a mind game. Industry is totally mind. If depression, struggling, everything is controlling your mind, then you're gone. So you should control your mind. Mind shouldn't control you. Right, sir, absolutely correct. There was a movie about the Three Idiots, if all of us remember, that we should, manipulate and control our mind. So thank you so much, sir, for the insight you provided us. Unfortunately, Karan sir has to leave. He has some place important to go. So we would like to thank sir. Thank you for all the amazing insight, and thank you for gracing our event with your presence. So thanks a lot, sir, for being here. Hope you'll Thank you so much. Honor is mine. My pleasure. My pleasure. Thank you all. Thanks a lot, sir. So now I would like to invite the next question. Please unmute yourself. So my question is from Shikha ma'am. Ma'am, what's your advice on how to live a happy and stress-free life? How to live a happy and stress-free life? Just to be happy, the most important thing in life is to be aware. To be aware of your processes, to be aware of what is happening to you, to be aware that these are the things which intrigue me, these are the things which interest me, these are the things about what I am concerned, and to take that forward. And once one is able to do that, then life becomes sorted. Stay away from comparisons. Yeah. So the Gen Z ka thing only is they're the generation which is born with the gadgets, and they are the generation which is living on the social media all the time. So the incessant what own histories. We are all coming from different cultures, and so what we are. Accept yourself the way you are, and you will be happy. Amazingly put, ma'am. Exactly, comparison is the worst enemy of the youth, if I may say. So thank you for your insight. Now I would like to call upon the next question. Please unmute yourself. Hello sir, hello ma'am. So I have a question with Sanjeev sir. What else should today's youth aspire apart from money? I guess every youth is running up for money, behind money, and they all want to earn and earn. So what the youth should aspire apart from money? That's my question. मुझे क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन. कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी? Sir, you're not audible. So if you want me to repeat the question is, what
what is more important in our life other than money. पैसे के अलावा हम लोग किसके पीछे हमारा एम क्या होना चाहिए पैसे कमाने के अलावा? देखिए, मोस्ट ऑफ जो देखा जाए तो सभी लोग जो जब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं या जब युवा लाइफ में जब बढ़ते हैं तो सबका एक ही एम होता है कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ या जो मैं जो भी कोर्स कर रहा हूँ उसके बाद मेरा आगे का लाइफ, मेरा आगे का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होगा, इस सभी के दिमाग में होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मनी अर्निंग के साथ साथ में आपको सोसाइटी को भी आपको कुछ देने की जिम्मेदारी होती है। एज इंडियन सिटीजन अगर हम देते हैं तो हमारे आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लेजेंडरी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी कुरीतियों पर काम किया, अपने फैमिली के साथ में, अर्निंग के साथ में उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों पर उन्होंने एज सोशल सेक्टर में जाकर उन्होंने काम किया है और काफी हद तक सोसाइटी में चेंज भी लाया है। तो मेरा थिंकिंग यही है कि आपको आपकी अर्निंग के साथ साथ में आपको सोसाइटी के साथ में जो सोसाइटी आपको दे रही है उसको आपको वापस भी रिटर्न करना है। तो एक जिम्मेदारी ये भी आपको आगे लेके चलना चाहिए कि जो हम फैमिली के साथ साथ में हम इंडिविजुअली जो हम सोसाइटी को दे सकते हैं वो भी हमें देना चाहिए। Right, sir, absolutely correct. It is always a two-way deal. It is never a one-way transaction. जिससे हम लेते हैं उसको पे भी करना पड़ता है. So, sir, very rightly said. Now, I would request the next question. Please unmute yourself and ask. Hello, sir. Sir, I would like to question Gaurav, sir. Sir, आप इंडियन यूथ कांग्रेस में नेशनल स्पोक्स पर्सन है एंड साथ ही साथ आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, तो क्या आपको मोटिवेट करता है कि आप दोनों चीजें या फिर कौन सी चीज आपको ज्यादा बेनिफिशियल समझ में आती है एज अ यूथ? See, being a lawyer and being a politician, I mean, it helps both ways. क्योंकि in one way you're actually practicing law and on in politics you're actually making law. So it's better if you have insight of both the fields. And you see, there has been a tendency कि यहाँ पे even in Indian history or wherever you go, majority of most of the lawmakers, they come from a law background or from a legal background, and so it helps. और मतलब what happens कि जैसे कभी कोई पॉलिसी आती है या कभी कोई गवर्नमेंट ऐसे नई स्कीम रोल आउट करती है तो उसमें जो निटी ग्रिटीज होती हैं वो बिकॉज वी आर डूइंग सो मच ऑफ लीगल रिसर्च एंड एवरीथिंग, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। देन बिकॉज आई एम आल्सो अ स्पोक्स पर्सन, देन व्हाट आई डू कि जो चीज हमें समझ में आ गई उसको कैसे सरल भाषा में हम दूसरे लोगों को समझाएं ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्योंकि आप देखिए कोई भी ऐसा लॉ आता है या कोई भी डिक्लेरेशन आता है या कोई भी ऐसी स्कीम आती है वो इतने सारे पेजेस में होती है और इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में होती है कि जो आम आदमी होता है उसे समझ में उसको मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसे समझ पाते हैं। तो हम लोगों को मतलब चूंकि हम लोग लीगल बैकग्राउंड से होते हैं रोज दिन भर ही वो काम करते हैं कि 100 पेज पढ़ना, 200 पेज पढ़ना, 300 पेज पढ़ना, तो उस तरीके से वो उस चीज को पकड़ना और उसमें से क्या क्या चीज सही है, क्या गलत है, किस चीज पे डिबेट करना चाहिए, किस चीज पे नहीं करना चाहिए, क्या समझाना चाहिए, तो ये काफी आसान पड़ता है और मतलब काफी अच्छा भी लगता है। और जब हम जैसे कि किसी भी लॉ को, और चूंकि क्या होता है कि अपना जुडिशियल इंटरवेंशन भी होता है, जैसे कोई चीज हमें गलत लगती है तो हम उसके अगेंस्ट में PIL भी डाल सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में रिट भी डाल सकते हैं कि इस चीज में आपका जुडिशियल इंटरवेंशन है जरूरी है। और इतने सारे टॉपिक्स हैं जैसे मैंने बताया था जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है या कोई भी हाई कोर्ट होता है वो खुद उन लॉ को हटा देती है जो उसे लगता है कि नहीं ये गलत है। तो उस वजह से मतलब ये दोनों चीजें से साइड बाय साइड चलती हैं, अच्छा रहता है। और मतलब चूंकि जब आप एक तरीके से बेंच पे हो बार में होते हो, बार से फिर आप अगर पार्लियामेंट में जाएं किसी भी तरीके पे उस पे असेंबली में जाएं तो उसमें आप के पास दोनों इनसाइट होती है कि ये जो चीज होती है ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो सकती है नहीं हो सकती है, इसको कैसे वो करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको फायदा मिल सके, मैक्सिमम कैसे इसके यूटिलाइजेशन हो। तो ये इसलिए दोनों वो चीजें मतलब आई थिंक इफ टू प्रोफेशन व्हिच गो टुगेदर वेरी वेल, these are being a politician and being a lawyer. Thank you, sir. It's very rightly said. In India, even in the constitution, the legislator and the
executive has always been interchangeable. So it's nice to, work both ways. So I would like to request the next question. Please unmute yourself. Hello, sir. I would like to ask a question from Gaurav sir. So, सर जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन यूथ 45% है पूरे इंडिया में, और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो अभी गवर्नमेंट ने जस्ट अग्निवीर स्कीम शुरू किया है. तो क्या आपको लगता है कि जो अग्निवीर है वो यूथ एम्प्लॉयमेंट में उनके साथ न्याय कर रहा है? नॉट नेसेसरीली. मतलब जिस तरीके से ये स्कीम रोल आउट करी गई है और जिस तरीके से इस स्कीम में चेंजेस बहुत रिसेंटली, मतलब जैसे एक हफ्ते के अंदर ही आपने 3-4 चेंजेस स्कीम में कर दिए. अगर इस स्कीम में इतने ज्यादा चेंजेस आप कर रहे हैं तो मतलब पहली बात तो उसकी जुडिशियल मतलब पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी नहीं हुई. इट्स जस्ट वन ऑफ दोस इल थॉट एक्सपेरिमेंट्स जो आप सोचते हैं कि हम इसको कर देंगे, मार्केटिंग के दम पे ऐसे कर देंगे और लोग खुश हो जाएंगे. नहीं, मतलब कोई भी स्कीम आप रोल आउट करते हैं तो उससे पहले जिस आदमी को उससे इफेक्ट पड़ रहा है उसके साथ एक डायलॉग होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उसे डिस्कस होना चाहिए, उसके बाद ही स्कीम को लाना चाहिए. अब आप डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसके थ्रू आप ले आते हैं और फिर आप बाद में जब लोग उसका अगेंस्ट में होते हैं तो फिर आप करते हैं, तो ये गलत है. और दूसरी बात, अग्निवीर जो स्कीम है वो बोल रहे कि टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की स्कीम. आई थिंक इट विल लीड टू मिलिटराइजेशन. और इस चीज से आप समझिए दो इसमें इश्यूज मुझे जो लगते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम Indian Army is being called to defend a political move, which is very wrong. And we have seen whenever army gets involved into politics, we have seen it in 1970s Pakistan Ziaul Haq के टाइम पर कि कैसे मिलिट्री ने फिर जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो खत्म हो जाता है, जो डेमोक्रेसी होती है वो खत्म हो जाती है. सो मिलिट्री शुड नॉट कम फॉरवर्ड एंड डिफेंड एनी पॉलिटिकल मूव. दूसरी बात आप ये देखिए कि इसमें जो बोला जा रहा है कि हम टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ये करेंगे. आई थिंक इतने सारे अभी जो है 1,70,000 जो है अभी CMI जो होता है, CMI की एक रिपोर्ट थी कि लास्ट ईयर सिर्फ इन द मंथ ऑफ नवंबर आई गेस 6 मिलियन जो वर्किंग जॉब्स थे, सैलरीड जॉब्स थे, वो खत्म हो गए. और ऐसे ही हर साल जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. और आप समझिए कि ऑन वन हैंड आप जो गवर्नमेंट के जॉब्स हैं उसे खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवेज में, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है आपका सारी चीजों में, आप जो हो रहा है प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरी तरीके से बढ़ रहे हैं. और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के जॉब्स देंगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्कीम्स के थ्रू. सो ये बहुत ही ज्यादा एंटागोनिस्टिक चीजें हैं, मतलब विरोधाभास है इन दोनों चीजों में. या तो आप जॉब्स खत्म मत करिए, और अगर आप खत्म कर रहे हैं तो फिर टेम्पररी स्कीम्स क्यों दे रहे हैं? तो मेरे हिसाब से ये जो स्कीम है ये काफी ज्यादा इल थॉट है. इसकी जगह अगर गवर्नमेंट को, मतलब जैसे बहुत सारे आइडियाज थे, रघुराम राजन जो नोबेल लॉरेट हैं उसमें उन्हें इकोनॉमिक्स में मिला, उन्होंने काफी सारे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे कि अगर आपको इंडिया में यू शेप इकोनॉमी वापस आपको ग्रोथ लानी है तो एक जो मिनिमम गारंटी स्कीम है, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. अभी मिनिमम गारंटी जो स्कीम है वो रूरल बैकग्राउंड के लिए है, जिसको आप MNREGA बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. वैसे ही एक अर्बन यूथ के लिए, क्योंकि वो कह रहा है कि रूरल यूथ के लिए तो आपने कर दिया, लेकिन अर्बन यूथ के लिए आपके पास कोई स्कीम नहीं. और अर्बन यूथ भी काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, अर्बन यूथ के पास भी पॉवर्टी में है. और अभी क्या बोलते हैं ये अपना हंगर इंडेक्स में, मतलब भूखमरी का जो एक इंडेक्स होता है उसमें जो भारत है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया इन सबसे पीछे चला गया. तो ऑन पेपर इकोनॉमी इज नॉट लुकिंग वेरी गुड. और इसीलिए जो मेन इश्यूज है उस पर हमें करना चाहिए. अग्निपथ की स्कीम इन पर्टिकुलर अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि ये काफी ज्यादा इल थॉट है. इससे बेनिफिट्स कम होंगे और नुकसान काफी ज्यादा होगा इन द शॉर्ट टर्म, इन द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन. Right, and I believe that Please unmute yourself. Yeah, sorry. So, yes, sir, I believe the debate on arbitrary policies will go on forever. And it's nice to have someone discuss so candidly about these things. So, thank you so much, sir and ma'am. Now, I would like to invite Harsha Dulani to present you all a vote of thanks. Sir, before I would like to ask a question from Sika ma'am. मैम, आप जैसे जानती हैं कि आजकल की यूथ में काफ़ी वाइब्रेंट पर्सनालिटी है जो कि
आते हैं LGBT कम्युनिटी से, और हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही है जिससे कि जो यूथ हैं वो अपनी पर्सनालिटी अपना सके। क्योंकि हाल ही में अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था राजस्थान की, जहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो गे थे। तो क्या आपको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रही है जो कि इन यूथ को आगे आकर अपनी पर्सनालिटी अपनाने में कुछ मदद कर सके? मैम माइक आपका। सो 2018 में ये लॉ पास हुआ था एक्सेप्टिंग द LGBTQ कम्युनिटी द वे दे आर. Theoretically it has been passed, but definitely उसको रियलिटी में एक्सेप्ट होने में समय लग रहा है. हालांकि आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, पीपल आर ओपनली टॉकिंग अबाउट इट, एंड मीडिया इज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड in presenting their thoughts and their feelings and including them as a part, as a part of the society. हो रहा है, but of course ये 2018 में ही पास हुआ है, so it will take a long time to to actually be accepted the way it is. The best we can do is कि हम लोग अपने आसपास, if we are seeing it, we be open to it. We accept people the way they are, and that's how change can actually take place. Yeah. Problem वही आती है जब लोग नहीं कर पाते हैं. यस मैम, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जितना देखा जा रहा है अभी गवर्नमेंट्स की तरफ से, जितने स्कीम्स आ रहे हैं और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, उससे लग तो नहीं रहा है कि मैम कि उन्होंने कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस पर. So I can't really comment on that, but definitely at personal level, you and I both, we should be open and acceptable to including them in our society. जब आप और हम जैसे लोग LGBTQ को accept करेंगे as a normal part of the society, automatically धीरे धीरे changes आएंगे. And क्योंकि कोई चीज़ जो इतने सालों तक not acceptable थी, मतलब people would be arrested कुछ समय पहले तक तो, so अब क्योंकि वो legalized हो गई है, it will take time to change the attitude of people. I think आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? Actually अभी दिल्ली हाई कोर्ट में there is first openly gay judge जो अभी elevate हुआ है, so things are changing. Yes. अभी 377 को struck down कर रहा है, but it will take more time to for it to normalize into government. अभी transgenders के लिए जैसे भी बहुत बड़ी लड़ाई थी. For that, now we have a third column in the gender thing. So it is being done. अभी राशन कार्ड पर भी आपको third gender लिख सकते हैं, गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसीज पे भी third gender लिख सकते हैं. But जो societal acceptance है, उसमें मेरे हिसाब से वो that will come from it is a bottom up approach. ऊपर से आप कुछ भी करते हैं कुछ नहीं होगा. So as you said कि मीडिया में portrayal हो, inclusive हो environment, then that would be much. And also queer history has been a very significant part of our own mythology and all. So अगर लोग वो खुद ही पढ़ें तो फिर I mean would be much more acceptable. True. Okay, thank you sir. Thank you ma'am. Sir, I have a question. Yeah. As my question is to Ashish sir. Gaurav sir. Yeah. Sir, as we have seen in the last few days, we have seen there is this clash and the crisis of this the issue of Jan Vapi Masjid and Kashi Vishwanath Temple came out, and this is how the Gulf countries and the Muslim countries started accusing the Modi government as if it is making the country. Sorry to intervene, Shubhant. I request you to please put your question in the chat box. And Gaurav sir, could you please be kind enough to reply him in the chat box, because this is moving to a bit of political discussion. Also, we are running a bit short of time, so I would like to request Harsha to present the vote of thanks.
So, good afternoon, everyone. I, Harsha Dalani, deem it a great honor to propose the vote of thanks for this edifying panel discussion at the behest of the organizing team. From the last few days, our sprightly team left no stone unturned and pushed themselves in order to make this event a resounding success. First and foremost, I would like to express my gratitude to our esteemed panelists, Mr. Gaurav Jain, Mr. Karan Kapoor, Mr. Sanjeev Joshi, and Ms. Shikha Handa, who, despite their busy schedule, found time to grace this occasion with their presence and enlightened us with their knowledge. I extend my heartfelt thanks to Dr. Parminder Kaur Ma'am, HOD Economics, for supporting us throughout to make this event a memorable one. Last but not the least, I would like to thank all the volunteers and students for your cooperation in making this event a great success. Finally, I take your leave with this inspiring quote by Martin Luther King: "An individual has not started living until he rises above the fines of individual concerns to the broader concerns of all humanity." Now, I would request Dr. Parminder Kaur Ma'am, HOD Economics, to share her views. मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब, आई एम श्योर, आप वेरी बिजी पीपल अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, पर आप बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आए, इस मंच पे आपने अपने विचार शेयर किए हमारे साथ। एंड मुझे आप, आई एम श्योर गौरव सर, आपको लगा होगा कि politically more we have a generation which has a lot of questions and a lot of dreams and ambitions, and it's questioning, I think, the current scenario, और उनको बहुत सारी चीज़ों के जवाब चाहिए. They should question. They should question, and I'm so thankful for you all. You know, it means us a lot, and I must thank, I think, Shruth also for getting you online, and Harsha Dudlani for getting Karan sir and Sanjeev sir online. शिखा हांडा मैम को, आई थिंक हर्षिता सो, हमने स्टूडेंट्स पर ही छोड़ दिया था कि आप रिसोर्स पर्सन्स लेके आए, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, आप लोगों को इस पैनल पे लेके आए, इकट्ठे बातचीत हो सकी. सो आपके लिए 1 घंटा होगा, बट आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स when they get to interact with the achievers of their life. So thank you all very much. Looking forward to more interactions in future as well. And sorry, I would also like to mention our core team, जिन्होंने बहुत मेहनत की. अभी मैंने कुछ नाम लिए जिन्होंने रिसोर्स पर्सन्स को बुलाया. We have a technically very sound person, Vasu with us. Then दिव्यांगना, जिसने पूरा प्रोग्राम मॉडरेट किया और बहुत खूबसूरती से सारे क्वेश्चंस को एक साथ पिरोया उन्होंने. Then Harshita, who was the member of the core teams, जिसने पूरा आइडिया कंसेप्चुअलाइज किया. अनन्या, यूली, रिया पटेल, बहुत सारे लोगों ने के अथक प्रयास से ये इवेंट हुआ. सो much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Thank you, everyone. You can leave the meeting. Kindly fill the feedback form.